मेरे 2 कंधे आए रोने के लिए। मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले लो एट दिस पॉइंट, व्हाट डू आई हैव टू लूज? मेरे कस्टमर्स खुश रहने चाहिए। You actually eat everything you order on your travels. Hi guys, good morning. It's the night after the fire and I'm in Delhi. Fire is in Bombay. Everything's in Bombay and I did consider going back, but honestly मेरे वापस जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं change होगा. So I've come here for that panel and I need to stay strong and go for it and put a facade and show up, and I'm gonna do that in just a bit. 2 बज रहे हैं, सुबह से मैं उठी हूँ. I've just been making calls, getting warehouses के quotations, के warehousing supply, logistics, माल मंगवाना है, compliances, accounts team से बात कर रही हूँ, लॉस मार्क करने के लिए जीएसटी रिटर्न करना पड़ेगा गुड्स का. देयर इज सो मच टू डू व्हेन इट कम्स टू दिस एंड वी डिड नॉट हैव इंश्योरेंस just for everyone who thinks that we'll just get insurance money back. I didn't have insurance. This is one thing that I just thought, like, you know, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ, like, it won't happen to us. Like, you have that mindset and then you're like in this minute I'm just like, I wish I did, but it's a learning curve, it's a learning lesson. Now after I get this new warehouse, my first step will be to get insurance for this warehouse and for even Amazon and Blinkit. The bright side of thing, if I look at it, is that I'm not completely out of business because I do have little bit of stock in Amazon, in Bangalore and in Mumbai. मेरे Amazon के warehouses में माल full है, तो उतना frother है मेरे पास. मेन तो मेरा frother है, बस मेरी कॉफी का सप्लाई आ जाएगा ये हफ्ते के एंड तक. कॉफी, आइस टी, हॉट चॉकलेट सब कुछ आ जाएगा, बट फ्रॉथर विल नॉट कम बैक सो सून. फ्रॉथर विल टेक वेरी लॉन्ग. इट विल कम बाय December. So anybody who's ordered the frother on our website, we'll have to replace their product with something else and really hope that they accept the replacement, because right now if I give refunds, the cash in the company, the cash flow is going to keep reducing. I'm anyways in debt. Like, of course I will not get any orders for the next 3 to 4 days. That will be in debt, and then nuksan hua wo alag. And then, like, there's a lot, you know. So right now refunds is something I can't do. I can fulfill on delayed basis and really just appreciate the support of my customers, which we are getting. We are getting a lot of love and support on social media. सुबह हमने पोस्ट किया है और मेरी टीम नॉन स्टॉप कोऑर्डिनेशन कर रही है सारे कस्टमर्स के साथ, and every customer has been very sweet, understanding, and just these things are not in our hand, you know. These are not in our hand, unfortunately. For all those of you who are watching this vlog for the first time and have no idea what happened, my warehouse last night caught fire. And when I say my warehouse, I didn't own the warehouse. It is a third party system जिनका warehouse हम लेते हैं. So they have other brands and other goods also. It's been a very bad fire. The walls of the warehouse are broken. सब कुछ तहस नहस हो गया. मेरे साथ दूसरी companies का भी काफी नुकसान हुआ है. Unfortunately this is not in our hands, and you know, short circuit is the reason that everybody thinks is the reason for the fire so far, but we'll have to investigate. Abhi, of course, police, fire department, all of them are doing their job till we get the fire report. I can't tell you why this happened, but what I have to do as a business owner is fix things so that my customers are happy and my business is up and running again. तो वो चीज मैं कर रही हूँ. सुबह से कॉल्स उसके लिए कर रही हूँ. मैं इसी हालत में कॉफी पी के बस कॉल्स ले रही हूँ. सुबह से मेल्स कर रही हूँ, डेटा शीट्स एनालाइज कर रही हूँ, स्टफ लाइक दैट. नाउ आई एम गोना गेट रेडी बिकॉज आई एम आल्सो गोइंग टू क्वर्कीज हाउस. मैं दिल्ली आई हूँ क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करने, पैनल अटेंड करने एंड स्टफ. उस हिम्मत से तो नहीं हो पाएगा, उस खुशी से नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर ही अंदर मैं रो रही हूँ, बट करूंगी जरूर मैं जो करना है, बिकॉज दैट्स द थिंग. वी क्राई अ रिवर, बिल्ड अ ब्रिज एंड वी मूव ऑन. वी हैव टू वॉक द ब्रिज, एंड आई strongly believe that Allah Pak has done this because he thinks that I am capable of handling this, and he will not put me in anything that he thinks I cannot handle. I am a strong believer that Allah Pak is taking care of me, and this is the start of something better. It's a hardship he's given me, it's a hurdle, and he's going to make things better for us. He is going to do it. So I have so much faith in my God that I know he's going to make things better for me, which is why my faith is so strong right now that I'm like, we will bounce back. We will, and we have to. We don't have a choice, right? We don't have a choice. I love my coffee. I'm going to shut my business and stop selling it. That's for sure. Like, I'm definitely not stopping selling my coffee. Like, subah when I was taking my meetings and calls also, the only thing I needed is to sip on Impulse. I need another sip of Impulse to be able to survive my day. So let's get rolling. Juveera's having a bath. I am not gonna have a shower because I had one last night. I also got my period, by the way. All this stress, and I still got my period. I was 1 week late. So ये me कुछ तो अच्छा हुआ, periods आ गए. तो अभी वो दर्द भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट मेंटल दर्द ज्यादा है तो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ. नाश्ता किया है रूम सर्विस मंगा के, तो नाश्ता I've eaten, and yeah, my stomach is full, but I'm still feeling hungry because I think it's stress, so I feel like eating non-stop. Let's wear an outfit, let's do makeup, let's put on a face and get through the day. Many hours later. हाँ, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ. गर्ल्स थोड़े सेट कर लिए और कोकी के घर जा नहीं पाई बिकॉज बहुत कस्टमर सर्विस करना था. When I opened the customer service panel, like my customer service person called me and she
she was like, Sara, there are more than 8,000 messages on Instagram and WhatsApp and 1,000 on only WhatsApp. So then I put I also was just doing customer service. All of us were doing customer service. Sharon, me, Bonaita, Shraddha, सब मिलके customer service कर रहे थे because I didn't want any customer to not be replied to. They need to know where their orders are because there are around, I think, a good amount of orders जो dispatch होने pending थे और अब वो हमारे पास माल ही नहीं है तो कैसे dispatch करेंगे? तो there is no stock to dispatch, so we need to let them know. I have done arrangements for the stock to come, for the warehouse to be assigned. warehouse के commercials चल रहे, उसका GST वगैरह करवाना पड़ेगा, address का and all that. Those things I'm getting it done, but we have a new warehouse company that we are onboarding now. Spoken to the founder of that, spoken to the person, got the commercials sheet, got the data updated. Those things are done. मेरा माल भी आ जाएगा. Some people were questioning कि quality of goods will be good or no. Of course, quality हमारा manufacturing unit completely separate है, हमारा warehousing unit completely separate है. हमारे manufacturing unit को अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ नहीं हुआ है. So हमारी quality में बिल्कुल भी कुछ भी difference नहीं आएगा. In fact, even in customer service, we want to give you the best quality, which is why even I was doing customer service the entire day. It's 5:30 right now. I've been doing customer service since like afternoon, since 2 o'clock, 3 hours, just replying to messages, DMs, everyone, especially of customers. So I know a lot of people are just pouring in love, but especially for customers, we wanted to give back the correct response कि उनको क्या resolution चाहिए अपने order के लिए. We really appreciate the customers who've not cancelled their orders. They're like, जब भी आएगा हम accept कर लेंगे, and that is so important and so special to me because at this point the main thing that gets affected is cash flow because I won't have any sales, I won't get any new money, I've lost money, I don't get new money, and I need to buy new goods. So cash flow gets completely affected. So I have loaned money to my company from my personal account ताकि मेरी company माल खरीद सके. So this is like a transaction I have to do internally, loan money. Alhamdulillah, I had it, so I didn't have to take others loan. कोई और company में, you know, they have to take loan to be able to buy new goods because अभी नया माल खरीदना है जबकि ये माल बिका ही नहीं जो खरीदा हुआ था. तो लगभग आई थिंक 30-40 लाख का माल पूरा खराब हो गया हमारा और बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास, तो वो सब चला गया. वो बेच के हम कमा सकते थे एंड देन वी वुड बाय न्यू गुड्स, राइट? बट नाउ दैट एंटायर गैप इज देयर. सो एनीबडी who's placed an order and not cancelling it for a refund is so much gratitude because then that money can stay in our account and we can use it to buy new goods to fulfill their orders. So what seriously gets affected right now is cash flow more than the loss. So that is like the entire logistics जो मैंने figure out किया कल रात से लेके आज सुबह तक. मम्मी से बात करी थी, मम्मी बहुत रो रहे थे because I'm not there, and the main thing is everybody is everywhere right now. पापा मम्मी मुंबई में है और रीत अरुणाचल में, शाम में भी नहीं है, रीत अरुणाचल में. So all the people who love me want to hug me and want to be there for me, and I want to hug them and I want their comfort, but I don't have that and they don't have me. So I've been calling them and telling them I'm okay because everyone's worried कि I'm breaking down. I already had a breakdown, so I'm done breaking down. I don't want to be in the hotel room anymore. आज हम सिर्फ फील गुड करने के लिए दिल्ली में घूमने वाले हैं. Can you believe? फील गुड करने के लिए हम दिल्ली में घूमने वाले हैं, बट फील गुड करने के लिए हम दिल्ली में घूमेंगे. और कल हम मिस्ट्री बॉक्स शूट करेंगे और कोकी के साथ शूट करेंगे वगैरह वगैरह. मैंने एक शूट कैंसिल किया है, मिताली के साथ मैं शूट करने वाली थी लास्ट दिन पे, तो मिताली को मैंने मैसेज किया कि मैं जल्दी निकल रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे फ्राइडे नहीं फ्लाई करना. आई वॉज गोइंग टू फ्लाई इन टू मुंबई ऑन फ्राइडे. इफ आई गो ऑन फ्राइडे आई हैव लॉस्ट द एंटायर वीक, सो आई वांट टू गो बैक ऑन थर्सडे आफ्टर माय पैनल. आई रियली वांट टू डू द पैनल व्हिच आई हैव कम फॉर माय ब्रांड एंड दैट्स अ वेरी good opportunity for me. I don't want to miss it. I also feel like I'll meet a lot of other founders so I can, you know, ask them for advice and stuff, which is something I really need right now. That's why I'm glad I'm going on the panel and not cancelling it. That's on 8th. और फिर रात को वो पैनल खत्म होगा तो 9th मॉर्निंग हम निकल जाएंगे फॉर मुंबई और फिर मैं मेरी टीम से मिल सकती हूँ ये हफ्ते में. मेरी टीम को भी मेरी जरूरत है और मुझे उनकी जरूरत है at this point. So I'm just very grateful that when I needed help, a lot of people have helped out from morning. I've got so many founders message me, so many people, Bonish sir, Anish, like all these founders that I know, Tuti, Vishker की, सब लोगों ने मुझे मैसेज किया, you need anything. सब ने मुझे इतने नंबर्स वगैरह दिए कि इसको कॉल करो, इससे ये कराओ, इसीलिए मेरा सब कुछ हो रहा है क्योंकि I really appreciate all the mentorship, all the advice I can get at this point. I'm a single founder, so it can get very overwhelming at times, but yeah, prayers, lot of love from my Sara squad and all the community that I've made in this industry really is showing at this point.
A few moments later. गाइस हम बिग चिल कैफे आए हैं जो दिल्ली का बड़ा फेमस है, तो सोशल्स भी था इधर कनॉट प्लेस में, बट दिल्ली के फेमस जगह ही आएंगे। तो मेरे 2 कंधे आए हैं रोने के लिए साथ में, तो हम साथ में रोएंगे या मुझे कंधा ऑफर किया जाएगा। बहुत कंफर्टिंग कंधे है मस्त। अभी मेरा रो के हो गया है ऑलरेडी, गाड़ी में भी रो ली थोड़ा सा। तो मेरा वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं ना, तो मैं रो नहीं सकती। The next day. नहीं हो रहा है मम्मा, नहीं हो रहा है, क्योंकि माफ करना है मम्मा। चुप बंद कर देना बेटा, छोड़ देना, बंद कर दे। हाँ ऐसा नहीं हो रहा है मम्मी, बहुत हेडेक है, बहुत कुछ संभालना पड़ा। छोड़ देना, बंद कर देना, उसको वाइंड अप कर देना। क्या बोलती है? नुकसान पे कैसे वाइंड अप करूं मम्मी? अभी तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे थे, अभी कैसे बंद कर दूं इतने नुकसान पे? तो फिर अभी वापस से पूरा ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना राजा। वेल मम्मी, मेरे 40-50 लाख चले जाएंगे, नई इन्वेंट्री भी मंगाई हूँ। हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। अभी तो नए से शुरू कर रही है ना एक। ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे गिव अप करना है। हर रोज कुछ नई दिक्कत आ रही है। हमको सपोर्ट करने के लिए लोग अमेज़न पे मंगा रहे थे, अमेज़न का एल्गोरिथम हम ही को असाइन करता गया। अमेज़न की एजेंसी का कॉल है। हेलो। हाय सारा। हाय कृष्ण, कैन यू अपडेट मी ऑन व्हाट्स हैपनिंग? अमेज़न का स्टोर फ्रंट आप लोग ने कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ जी, तो उसका FBA एक्टिवेशन हो रहा है। It will go live in a couple of hours. Second is on the Blinkit front. I don't think it is a problem because I checked with my friends. They are able to buy the product from Bombay. So it is a very specific order that you might be talking about. आप एक बार आपकी साइड से ऑर्डर करके देख लो। मैं दिल्ली में हूँ ना कृष्णा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दिख भी नहीं रहा। नहीं तो बॉम्बे में किसी को बोल दो। हाँ ठीक है। I have confirmed because I have asked a few friends. हाँ उसने सारे कार्ट में डाल दी थी सब फ्लेवर्स, तो शायद वो एक वेयर हाउस में फ्लेवर नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा Probably, but ऐसा सिलेक्टिवली कैंसिल भी होएगा। अगर वो नहीं, समझो 5 फ्लेवर्स डाला है, 3 अवेलेबल है तो 3 पहले आएगा एंड बाकी के 2 का रिफंड आएगा। ऐसा होता है। उसको पूरा ही ऑर्डर का रिफंड आया। Might not be serviceable right now for some reason. That it must be a one-off order. Blinkit is running as usual. Don't worry on that. Blinkit is running, Amazon is not running right now. Amazon is not Does running. that I will affect confirm. my complete, like हमने डीएक्टिवेट किया तो हम सब लूज कर देते हैं क्या, जितना कीवर्ड बिडिंग एड्स किया सब नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक गया है, तो अभी कुछ लूज नहीं करेंगे अपन। तो FBA में आने के बाद वापस ये ग्लिच तो नहीं करेगा ना Amazon? करो रीडायरेक्ट नहीं। ट्रैफिक कि नहीं करो? अभी मत करो। We need to confirm. So see, there's a glitch from the software's front. Yeah. Which is not allowing MFN to be made zero. So इसके लिए we deactivated both, and we'll only activate FBA. Once we get a confirmation that MFN is also zero and FBA is live, then you can redirect. I'll share that update, Sara. Give me some time. Okay Krishna, please do. Okay? Yeah. You take care. You seem to have a bad throat. No, I'm crying. Bad. Oh, I'm sorry, Sara. I'm really sorry for this loss, and I'm really sorry. It's okay. Bye. I'll talk to you later. Bye, Sara. मुझसे नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है गाइस। मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं रहना स्ट्रॉन्ग, नहीं रहना। मुझे किसी के लिए भी इंस्पिरेशन, मुझे नहीं रहना स्ट्रॉन्ग। मुझसे नाश्ता भी नहीं किया गया, सब उल्टी करके वापस आ रहा है ऊपर। मुझे घर जाने में घर नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज मेरा वो पैनल है कल के लिए। मैं लाखों खर्चा करके दिल्ली भी आई हूँ काम करने, मार्केटिंग करने अपनी कंपनी की। क्या फायदा मार्केटिंग करके जब प्रोडक्ट ही नहीं बचा। जस्ट स्टार्टिंग टू डू वेल एंड दिस हैपेंड, सो आई हैव नो होप। आई जेन्युइनली have no hope. I've lost so much power. Can't even imagine. Oh my God. I lost all my inventory. How will I start all over again? कल से मैं खाली रोबोट के जैसा काम कर रही हूँ, जो जो लोग बोल रहे हैं मैं किए जा रही हूँ। What can I do? You tell me. Delegate it to me, please. I'll be more than happy to help and do things for you. Don't stress so much. I know this is not gonna help me saying don't stress, but I'm just saying I'm there for you. There's no work to do, honestly. That's why I'm also in Delhi. क्योंकि अभी जो करना है वो मैन्युफैक्चरर्स को माल देना है। बाकी मेरी ऑप्स टीम वेयरहाउसिंग वगैरह सेटअप कर रही है। Negotiations and all are on. Yesterday तक I was still like sympathizing with
everyone else also who lost because 60,000 square feet got burnt. Now I'm just like, I think I'm in shock. I think I'm not okay. Are you home, like with family? Who are you No, with I'm right in now? Delhi. I told you, I had a Alone? panel, Economic Times. So it was your first panel, right? You were talking all Yeah. about it. Yeah. Go for it. Go with the same enthusiasm. I get that. Life's been very tough on you. I get that. But Baba, at the end of the day, that's life. Everything works out. Never lose faith in the universe. Never lose faith on what God is doing. See, the universe knows that you can handle it, Baba. Although it's unfortunate, that is no way of justifying of what has happened to you. Okay, it's unfair. It's straight up unfair. But if anyone can handle it, it's you. तुमने हमेशा किया है. I've told you, right, that surviving and never giving up, that's your superpower. I can't survive anymore. I don't want to. नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोलते. नहीं करना मुझे. ऐसा नहीं बोलते ये. A few moments later. आज या कल मैं लाइव करके प्री ऑर्डर लेना स्टार्ट करूँ. मुझे एक बात बताओ, आप मुझे हमारे कल भेजोगे 2 बजे की तरह करेक्ट? मुझे इन्वर्ट कल है थर्सडे, नहीं कल है वेडनेसडे. थर्सडे इवनिंग तक होना चाहिए इन्वर्ट करेक्ट. 24 आवर्स 48 आवर्स में इन्वर्ट होगा. हसन क्या टाइम पे पहुंच रही है टेम्पो कल की? मॉर्निंग में हमारी पहुंच जाएगी. नहीं हसन, ऐसा नहीं होगा ना. प्लीज क्यू सिस्टम, अगर आज तो 2 बजे तक का माल आएगा, वो सब पे तो रहता है ना इन्वर्ट के लिए. हमारा आज प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, आपको मॉर्निंग में सुबह ही मिल जाएगा. हाँ, पर जो भी है वो 48 आवर्स वर्किंग आवर्स हम करते हैं. मल्टीपल कॉल्स करने हैं. पहले मुझे एक अप्रूवल लेना है, तो मुझे ऑपरेशन हेड को कॉल करना पड़ेगा. देन आई हैव टू टेक वेयर हाउस मैनेजर, ऑनबोर्डिंग मैनेजर. मुझे मल्टीपल कॉल्स करने हैं प्लस लीगल. मुझे ना 3 या 4 टीम्स के साथ है ना वो करना है कोऑर्डिनेशन. तो मुझे एटलीस्ट हाफ एन आवर तो दे दो. मतलब नहीं हो पाएगा. नो पॉइंट ऐसे क्या आई एम कमिंग बैक टू यू इन 5 minutes. I need all this coordination and आप करो, बट आप सबको बोलो कि हमको बेस्टेस्ट केस सिनारियो देके परसों डिस्पैचेस स्टार्ट करने. आप लोग कल कैसे भी करके GRN वगैरह जो करना है करो. आप मेरे से एक्स्ट्रा 10-15 हजार ले लो, बट आप कर लो प्लीज. 10 मिनट दे दो ना. आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू. ठीक है, प्लीज जो भी कर सकते हो अजय को बोलो. मैं डेस्परेट हूँ. या नहीं सारा डोंट से प्लीज. मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, पर मुझे सिर्फ प्लीज हाफ एन आवर का टाइम दो. ठीक है. Let me coordinate everything and then I will come back to you. मतलब I cannot commit right now because ठीक है. operations is not my forte. ठीक है. ठीक है. ओके गाइस, I cancelled the shoot with Quirky today. आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. Yesterday I think I was only on adrenaline. Like I was only on adrenaline. जहाँ मैंने सब कुछ set कर दिया, calls कर लिया and all. Today I'm grieving, really grieving. I don't feel like doing anything. I don't feel like eating. I ate breakfast. नीचे जो था सब उल्टी करके निकाल दिया मैंने. मुझसे नहीं हो रहा. फिर भी मैंने खाना मंगाई हूँ क्योंकि मुझे खाना पड़ेगा. मेरा headache हो रहा है अभी. Just requesting the warehouse. कल माल पहुँच जाएगा तो I'm requesting the warehouse के please at least Amazon के और जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो कल लिख के कल ही फुलफिल करो. और मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले लो. एट दिस पॉइंट व्हाट डू आई हैव टू लूज. मेरे कस्टमर्स खुश रहने चाहिए. इनका ऑर्डर निकालो, फिर मैं अपनी वेबसाइट लाइव करूंगी. लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन आर टेलिंग मी सारा प्री ऑर्डर्स ले लो तो कैश फ्लो आपका रहेगा. बट वेयर हाउस भी नया है ना, तो आई डोंट वांट टू शॉक द वेयर हाउस. प्री ऑर्डर्स लूंगी. आई नो कि आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे. ऑलरेडी अमेजॉन ब्लिंकिट पे इतना ऑर्डर कर दिए कि एल्गोरिदम चकरा गया उनका. तो आई डोंट वांट कि ये वेयर हाउस भी गलतियां करने लगे फिर हम वो गलतियां सुधार रहे हैं. नहीं चाहिए मेरे को पैसा. नहीं, कैश फ्लो ठीक करवाना. प्री ऑर्डर नहीं चाहिए. धीरे 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 सिस्टमैटिकली करूंगी. फीलिंग मच बेटर. आई एम हैविंग माय मस्ती भरी स्ट्रॉबेरी. होपफुली बाय द टाइम यू सी दिस व्लॉग इट वुड हैव gone live. I will ensure that it goes live by the time you see this vlog. Online community has been so kind, so nice, so genuine, so helpful. I have gone through all the process of grieving and genuinely they've been there for me. This one message from Simi actually made my day. Simi Goraya, in case you know her, she's a beauty creator. She said, I know it's too soon to say this, but you've held a company for 4 years. That means you're doing something right. People can't sustain a year, and even with all the fundings in the world, don't let this break your morale. It'll be another story in a few years. Keep going. And that I told her I've received a million messages, but ये message का power इतना ज़्यादा है क्योंकि that just in such a short message she gave me the power कि कुछ तो सही कर रही है बंदी जो 4 साल से धंधे में है तो कर लेगी. Like अभी मुझे इतना give up करने का वो हो रहा है. I'm telling you, I'm only not giving up for my team because my team has been hustling from the moment they found out and they've been like वो लोग इतना जुनून दिखा रहे हैं तो मुझे give up. जब मेरी टीम इतना जुनून दिखा रही है तो मैं कैसे give up कर सकती हूँ. The next day. Good morning guys, it's the 8th of October. आज 3 दिन हो गए to the fire and today I'm feeling a lot better. I woke up with
इंटेंट दैट अभी चीजें फिक्स करने का टाइम आ गया है, अब बहुत रो लिया. सो टुडे आई एम ड्रेस्ड इन दिस नाइस क्यूट वेस्ट कोट, ये भी मैंने सवाना पे लिया है, विद माई ब्लैक ट्राउजर्स. आई एम गोइंग टू शिवेश's हाउस एंड शिवेश के साथ हम शूट करने वाले थे. We actually had 2 YouTube video ideas to shoot, but because of everything that happened, Shivesh is like, just do what you feel like doing. Don't like, he was like, नहीं भी करना है, we'll just chill. I was like, no Shivesh, अगर मैं शूटने की इतना दूर तक दिल्ली आके अगर मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना कोकी के साथ शूट किया, ना मिताली के साथ शूट किया, and अगर मैं तेरे साथ भी शूट नहीं करूंगी, I'll feel like such a failure. I'm already feeling like a failure. So he understood that and he's like, you come, we'll shoot one video. I'm actually feeling a lot better. I feel like shooting another video, but let's see उसकी मतलब अगर if he's planned another video after this for himself, whatever his day looks like, because we actually only planned one. I did my hair like this. It looks really nice. I like my hair and makeup. And मेरी आंखें काफी सूजी हुई है with all the crying. My face is also big and puffy, but we'll walk through it. Okay, let's go, you guys. I'm taking a lot of impulse for Shivesh because of course he's big with Shivesh. It's useful to him. And मेरे पास impulse इधर है. अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी 4-5 बॉटल हम लेके आए थे सारे क्रिएटर्स के लिए वो सब है. So yeah. Also the panel is today. Like जिस चीज के लिए हम आए हैं वो आज है 8th को. So today at 5:30 to 6:30 is the panel. So after I'm done shooting with Shivesh, I'm directly gonna head to the panel, which is in another Leela. I'm staying in Leela. This is in another Leela, which is in Gurgaon. I think I didn't want to stay in Gurgaon. I don't find it safe. So that's why it's in Leela. That's why I didn't stay with the panel. इस panel तो 1 ही घंटे का था और दिल्ली में हर चीज दूर ही है. I'm actually nervous for the panel because well, I don't even have a business right now. What am I gonna talk about? And I am nervous because I'm with all other coffee found like Barista CEO and all these other big coffee brands के founders. And then there's me. So yeah, I'm nervous, but let's just go. Abhi ke liye, this is the outfit, and I'm wearing these heels because I might change for the panel. I really like the outfit for the panel, but मैंने एक backup carry किया क्योंकि शिवेश के साथ खाना बनाना होगा और अगर इस पे कुछ गिर गया, so I need a backup. So we are carrying a backup dress for the panel. तो अभी मैं ये heels पहन रही हूँ ताकि वो dress के साथ भी अच्छी लगे. और पूरा दिन आज मैं heel में रहने वाली हूँ. Wish me luck. Taking a lot of stuff. Quirky का mystery box भी इसमें है. शिवेश के घर से उसको V-Fast करूंगी मैं. And इसमें Quirky का gift box है और ये सब शिवेश के लिए. So gorgeous. All your travel pictures. I always show my mom all your travel pictures. Thank you so much. Time का क्या बोल रहे? लेट हो गया? किसका? नहीं करें स्टार्ट. मतलब मैं तो सोचा था तुम थोड़ा सांस तो ले लो. हाय. तुम लोग बैठो पानी पियो फिर चलते 2 मिनट में. डन. कल शूटिंग अदिति वाला फाइनली. नहीं अदिति को भी कल थोड़ा बुखार जैसा आ गया. इस टाइम में सबकी तबीयत खराब हो रही है. तो यहाँ पे बारिश ऐसा होती नहीं है जैसे कल हुई है. Yeah, that's what she was like. दशहरा के दिन रावण नहीं चला. हाँ उस दिन भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई. तो ये यूजुअली होता नहीं है. मैंने सिर्फ ये रील में देखा है इतना. बस अब मैं शिवेश की रील के अंदर आ रही हूँ. Damn cute, but you can't tell that only this much is the space. हाँ, exactly. ऐसा लगता है बहुत जगह है. हाँ. प्लस क्योंकि तुम लोग दिल्ली में रहते हो तो हर चीज है एक्सपेक्ट बहुत जगह है. Do you actually eat everything you order on your travels and post? Yeah. वो सब कुछ लोग आता है. ट्रैवल पे तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल आई एम ईटिंग. मतलब मेरा पर्पस यार मेरे से सबका अलग अलग पर्पस होता है टू ट्रैवल. एंड मेरा ट्रैवल का पर्पस ही है कि मुझे जाके वहाँ का खाना एक्सप्लोर करना है. एंड सोलो ट्रिप्स पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है To finish your dishes. एवरीथिंग. बट ऐसा मैं एक डिफरेंट टाइम जोन और एक डिफरेंट मूड जोन में होता था. आई एम जस्ट लाइक यही तो जिंदगी है. मतलब मैं क्यों ही काम कर रहा हूँ. मैं क्यों ही काम कर रहा हूँ. मैं जब सोलो ट्रिप पे जाती हूँ I also want to do what I eat in a day. Yeah. मैं अपने मंगाऊंगी और फिर कौन खाएगा इसको. You won't believe when I went to Paris for the first time. मैंने एक्लेयर भी नहीं ऑर्डर किया because मैं बोली वो एक्लेयर में खत्म नहीं कर पाऊंगी. मैं तो मेरे को तूने एक्लेयर बोला मुझे एकदम ऐसे विजुअल अच्छे से याद है कि ऐसे ब्रिज पे मैं चलते चलते मैंने पूरी पिस्ताशियो एक्लेयर खाई थी. स्टार्ट से ऐसा तो मिला था यार मैं वापस जाऊँ एक और लेने के लिए. तो मैं चलो छोड़ो यार थोड़ा कंट्रोल. So I'm like how does Shivesh order and eat it all? Order तो मैं भी कर सकती हूँ. No problems for me. मैं खा लेता हूँ बहुत खुशी.
time I'm traveling with you, I'll eat one dish and I'll have so much to take pictures of. Guys, first recipe हम try करें बहुत सारी with Shivesh in the house. Start with Yeah, I'm in Shivesh's house and we are trying. आज सुबह तो caffeine rush होने वाला है. मैं एक पी के आई हूँ already. शुगर रश भी जो इतना पूरा हमने तिरामिसू डाल दिया इसके अंदर with sugar. And can you believe Shivesh is controlling his sugar, guys? पर ये तो मैं ट्राई करने वाला हूँ. Of course. देखो इतनी अच्छी लगी. मेरे को बहुत अच्छी लगी. मेरी बेस्ट है ये मतलब actually I like that it's very strong but it's also sweet. I'm gonna give it a shot. I loved it. It's really nice, yeah. Oh my god. Sharon will love this. It's very like cafe style. मैंने बोल दिया कि अगर मुझे इसके पैसे देने पड़े. नहीं देगा शिवेश नहीं देगा. शिवेश. So good. I have been to ice cream. हाँ, but Same. Remember एक बारी when I had put salt and you guys So were like, good. yeah, वो वाली मैंने खाई थी. It was nice. मस्ती. अब रोज यही बना के देते हैं. It's healthy also. Bro, शिवेश will be like मेरे को छोड़ के सबको अच्छी लगी. Crazy. I love Team Shivesh and Team Sara all have approved this except Shivesh himself. One eternity later. गाइस हमारा शिवेश के साथ शूट करके हो गया. I've come to DLF मॉल. यहाँ पे बाजू में लीला है. एम्बियंस मॉल, सॉरी, DLF एम्बियंस. एंड बाजू में लीला है. उधर मेरा पैनल हो रहा है. तो अभी मैं कुछ खा रही हूँ पॉल में. There's 1 hour to eat. जुवेरिया ऑर्डर्ड फिश एंड चिप्स एंड शी इज गॉन टू H&M. उसको बहुत ठंडी लगी थी. वो जैकेट लेने गई है अपने आप के लिए. तो आई एम गोना स्टार्ट बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. I told her I'm starting. She's like please खाओ, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ढंग से. मैंने नाश्ता ही नहीं किया आज. वो गई थी नाश्ते के लिए. I was sleeping a little extra. So I'm gonna eat fish and chips first. Oh, my scrambled eggs is also here. Pasta is so good. Oh my god. I didn't know Polka pasta is so good. Why don't we go to the Palladium wala? 1 hour later. Let's now welcome Ms. Sara Sarosh, founder Impulse Coffees. It creates a brand pull also. I mean, has it created for you? I mean, obviously you mentioned about that. So, in terms of managing communities also, like Sarah would like to understand from your opinion. I mean, is community building helping your brand? How do you manage your marketing and influencer marketing currently? I think for me, community is everything because I started by creating content. I've been a content creator for 8 years. I'm only an entrepreneur for the last 3. The first thing I understood is the community I'm building online. Connecting with them through whatever I am doing, whatever my journey is, and keeping them engaged is literally what I'm good at. I think that is my brand's biggest USP. At Impulse Coffees, my motto was to get them that cafe coffee experience, but at home, because I was an instant coffee drinker, an instant coffee lover, and I wouldn't say that there was the gap in the market in instant coffee. We had a lot of instant coffee. So what I wanted to do was something different, and that's why we went ahead and launched flavored instant coffee. Today we have India's largest variety of flavored instant coffee at Impulse. We have 10 flavors. We do a lot of limited edition flavors, just like Saurabh said. We keep them engaged to the season that the flavor is available for, and people actually look forward to, coming back for that. My biggest consumer is definitely my audience that I've built online, because for the longest time we didn't do any paid media marketing, and I think today a founder first brand is definitely the future that I'm seeing out there, where I see so many founders starting to create content after they have brands.
And I think that's the best way to go about it because nobody's going to sell your product like you're going to sell your product. Nobody knows your brand like you know your brand. Like I could have 10 other creators speak for my brand, but only I can tell you what I'm selling, why it's so good, why is my coffee different, and what are you going to get in it. My audience is extremely engaged. In fact, we just had a tragedy 4 days back where I was met with a fire. And my entire audience is like glued and waiting that when is Impulse Coffee's gonna make its comeback. And you know, it's like a movement on the internet right now where everyone is just rooting for us to make a comeback. So where I could have easily as a solo founder broken down, kind of given up, you know, I don't have any hope. But they are the ones who are giving me hope that we love your coffee. I have a 60% repeat on my website. And they're all people who are like, we love your coffee, we want it back. So I think building your community is pivotal. I think there's nothing I would replace that for. And you always got to speak for your brand first. And then you'll have everyone, like everybody becomes an influencer then for you. You know, right now I have so many other brand founders speaking for my brand, other influencers speaking for my brand, audience speaking for my brand, because they all want my brand to be back. Wonderful way to end with this final panel on coffee. You know, we've discussed coffee so much. I see everybody wide awake. Despite the fact that we've been seated since morning, can we please give all of them a round of applause, please, for a fantastic session. Live from the first edition of Indie Food XP, I have here with me Sarah from Impulse Coffee. Hi, Sarah, how are you? Hello, hi, I'm good, very good. Thank you for having me. Sarah, first question is, what stage this coffee industry is like now, and where do you see this after 5 years? दिल्ली का हमारा सफर यही खत्म होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला। somehow दिल्ली कभी मेरे को भाती ही नहीं है, पता नहीं दिल्ली और मेरा नहीं बन रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। But every time I come to Delhi, something goes wrong, and that's why I always used to avoid coming to Delhi. But I don't know, maybe I'm just superstitious. But in such times when you're already weak, you want to believe in a superstition, you know that. So anyway, I'm a lot better now than I was. I'm sure in this vlog you've seen me at my most vulnerable. If by any chance I've turned off the comments of the vlog, it's only because I am vulnerable, I am weak. I might put on a smile for the internet, but inside this brain what is happening is tricky. You know, when you're a public person, they'll say a lot of everything and a lot of rubbish. I don't need to prove anything to anyone. Eventually नुकसान मेरा हुआ है, दिल मेरा टूट रहा है. I'm a solo founder, so nobody else also could understand what I'm going through right now except another founder who's put their heart and soul and passion into their company. Like right now, so I'm sipping on my own brand's coffee, and I know for a fact that I can't shut the brand. That thought was so strong in my brain because it's easy to close down when you've already lost everything, right? Why do you need to put more money and start all over again? But only because I believe in my product, I'm doing that. And also, so many founders met me yesterday who are such big entrepreneurs. The founder of Key Ventures and other like Barista and all these other big people in the industry. Older people, they've been in the industry and space for so long, were so kind. We were talking about community building and Gen Z and stuff. And then when we came down, they were like, it's so nice how you're using your community to build a brand, and that's so commendable. And you know, we should sit together, we should talk. And it made me realize that I'm doing something differently that is making even such big founders feel like, you know, बंदी में दम तो है, हम बात तो करें इससे. तो फिर ये सब मोमेंट्स में थोड़ा तो वैलिडेशन मुझे मिला. कल का पैनल अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. शिवेश के साथ शूट करके I felt like a creator again. Going on the panel, I felt like an entrepreneur again. Baby steps to recovery. As soon as I go back to Bombay, I have to go to a warehouse जहाँ माल already unload हो रहा होगा as I speak to you all. So mashallah, coffee, hot chocolate, iced tea is back. Packaging material will take some time to print, so there won't be custom packaging for Impulse for another week. The frother will take some time because the frother was a very big consignment that I've lost. It's a very very big consignment. जो आपको अगर याद है, मेरे बस कुछ महीने पहले जब frother launch हुआ था, मैं खुद warehouse गई थी, इतना बड़ा consignment आया था. तो आप imagine कर सकते हो 50% उसका जल चुका है. तो frother वापस लाने मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वापस वो इन्वेस्टमेंट करने मुझे थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा. So at this time, more than ever, I would really appreciate all the love, all the support. I never tell you I'll give shop from Impulse if you love me, but for now, even if you don't love coffee, please shop from Impulse if you love me.
it would really mean a lot to me. Just help me set up my cash flow so I can get the company up and running in smooth functioning again. Thank you so much for everything, your words, your kind support. Y'all have no idea. The people who've been nice to me, kind to me, a lot of them actually, a lot of them. The whole internet I feel like has stood by me in the storm and it has truly strengthened my resolve. Thank you so much. I'm gonna end the vlog here. I'm not gonna give a Sara Squad shout out specifically because all my Sara Squad in the broadcast on Instagram, y'all are the true people. Like even when I was at weakest, मैं broadcast में ऐसे बात करी थी जैसे मेरे best friends हैं वहाँ पे. And y'all have given me a very safe space on my Instagram broadcast. So thank you so much. I love y'all. I'll see you in the next one. I don't know if I'm gonna vlog from my new warehouse or I'll directly see you from home. तो मिलते हैं in the next one. Bye. I love you.